What is the motion? When any object changes its position, right? And whenever any object is changing position, you know, time is not stationary. It is always moving. So whenever any particle changes its position as time is changing, we call it as a motion. Acha, you have studied this thing in the like ninth class, the living thing and the non-living thing, right? So in that one, there's a one point actually. Like if you see the plants now, they are like stationary at their position. But if you see their branches, their roots, they are also in motion, like against the gravity and toward the gravity, like roots and the leaves, right? Yes, sir. Okay. So in this chapter, we are going to study these five topics mainly. The first one is the rest and motion and the frame of reference. Frame of reference is like very common ना, अगर आप frame of reference समझ गए तो आपको है ना आधी फिजिक्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. Then we will study position, displacement, and distance. Then speed, velocity, acceleration, uniformly accelerated motion, and non-uniformly accelerated motion. So first we'll start with kinematics. Kine means motion and matics means measurement. So whenever we're going to measure our motion, or we can say the branch which deal with the study of the motion, we call it as a kinematics. When we like started like worrying about the causes of the motion, then we'll deal with the dynamic of motion, or we can say you'll study this thing in the Newton's laws of motion, why any object is moving. But यहाँ पे हमको जो study करना है, that is only about the motion and like how it's happening, why it's happening, that is not our question in this chapter. देखो क्या होता है ना दुनिया में, there is anything, whatever you see, either they are rest or in motion, and that is also relative. दुनिया में ना एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं होता ना, अदर देन रेस्ट इन पीस. ठीक है. बाकी तो सब क्या होता है, या तो रेस्ट पे होता है किसी के रिस्पेक्ट में, और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट. सो यू कैन से द मोशन एंड रेस्ट बोथ आर द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन. ओके, तो मैं यहाँ पे लेट मी ड्रॉ हियर. So suppose there is a person who is standing here, and next to him there's another person who is standing next to him. Okay, and these both person are standing in a car which is moving with speed v, and there's another person who is standing on the ground. तो आपको पता है, if let me give you the name A, B and C. So if A observes the B, what he will find? He'll find that B is at rest with respect to A. If you ask the same question to person C, so what C person say? He say like the position of B is continuously changing with respect to him. So he will say the object B or person B is in motion. और वहीं हम देखेंगे पर्सन ए क्या बोलेगा, इट इज इन रेस्ट. बिकॉज हमने बोला कि जो रेस्ट इन मोशन होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ. इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. या विजय कृष्णन, टू यू इज इट क्लियर? ओके. देखो दिस इज योर चांस ना, लाइक यू सम ऑफ यू ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन योर लाइक वेयर यू स्टडीड. तो अगर आपको वहां का भी कोई डाउट हो ना जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन आस्क इन बिटवीन. ओके, नाउ we'll start the rectilinear motion. तो हम मोशन में बात कर रहे हैं, so we can study the 2D motion, 3D motion. In 2D motion we can say motion like in circle, or you can say motion in like projectile motion. So these are the example of motion in 2D. But here we are going to study the motion in 1D, or we can say rectilinear motion. So what happen in rectilinear motion? Object moves in on along the one axis only, either it's along the y axis or z axis or any axis, but it will move only in one direction.
It may move like in both the direction, positive or negative, but on the same axis. So we call this kind of motion is motion in 1D. You can see a lot of example in real life, in like real life, where you can see the motion in straight line. Like this is one of the cartoon that I used to see when I was child. I used to call it Road Runner. Okay, and it's a kind of full of fantasy. So here you can see the motion, like motion in straight line. तो ये रोड रनर किसी ने देखा है आप में से किसी ने कार्टून ये वाला कभी? एनीवन? No, sir. नहीं, चलो कोई बात नहीं, कभी आप देखना, इट्स वेरी फनी. इट्स लाइक साइलेंट कार्टून ना, देयर इज नो वर्डिंग, ओनली एक्शन. ओके, yeah. Now we will come to the point where we are going to discuss the reference frame. देखो reference frame क्या होता है ना, you have to understood this thing. Like reference frame is a frame where observer is sitting. तो जहां से ऑब्जर्वर है ना आपके मोशन को ऑब्जर्व करेगा, वो आपका होगा रेफरेंस फ्रेम. लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन जहां मैंने एबीसी बताया था, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, with respect to him the reference frame is also on rest, but the person who is standing in the cart or in the car, for him the reference frame is also moving. तो सपोज करो आप आपके घर पे बैठे हो अभी, so with respect to me also you are in the rest, because we all, like I am assuming we all are human being and we are all are sitting on the earth, right? So I can say like wherever you are sitting in India, your position with respect to me is at rest. But suppose करो कोई alien है who is observing you continuously from another planet. वैसे तो ऐसा होता नहीं है, but just for a sake of understanding ना, assumption है. Physics में we are like already considering lot of assumption. So if there is any alien who is sitting on the net planet, sorry, any other another planet, and if he is going to observe you, what he will find, like your planet is continuously moving with respect to his planet, so he will find like you are also in motion with respect to that alien. So rest and motion completely depends on the frame of reference. Hence proved ना, समझ में आ गया होगा आपको ये? Now we are going to discuss the position. Like it is very important to figure out the position of any particle, but before finding the position of any particle you have to define something, and we call that point as a reference point or reference frame. Once you define the reference frame, उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, किसी भी पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन कर सकते हो. सपोज करो दिस इज योर y axis and this is your x axis. Okay, and suppose करो here is some point which is moving on this point. तो अगर आपको इसका पोजीशन बताना है, okay, so what you will do, you will take this point as a reference, so you can take this point as a 0,0, and whatever the position of this point, let me say x, y as of now, right? तो x, y जो ये आया, मान लो ये यहाँ से मूव करके गया ना, इट कैन गो थ्रू एनी पाथ, जो भी यहाँ पे इसका पाथ बना होगा उसको फॉलो करके यहाँ जाएगा. Then you can say the position of this particle is with respect to this reference point. So हम जितनी भी position define करते हैं ना, we always define with respect to some reference point. Is it fine, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Suppose करो if you have to define the position of any particle in 2D space, so what you'll do, you will write that point as a x, y. Okay, and if you have to write the position vector, तो आप क्या करेंगे, r vector is equals to x I cap y j cap. Similarly मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज को देयर इज अ पॉइंट इन अ स्पेस दैट इज 3,4, है ना? तो आप मुझे बताओ कि हाउ आई राइट द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, कैसे लिखेंगे इसको? So 3 I cap plus 4 J cap. या इट्स अ 3 I cap plus 4 J cap, राइट ना? ग्रेट. सपोज करो मैं इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ ना फर्दर. सपोज करो इफ आई एम डिसाइडिंग टू टेक अनदर लाइक रेफरेंस फ्रेम ना, अभी तो मेरा ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, बट सपोज करो मैं इस वाली एक्सिस को ना, कौन सा एक्सिस को अपना एक्स मानूंगा, इफ दिस इज माय एक्स एक्सिस, ओके,
let me say x dash, and this is my y axis. Then earlier I was taking this point as 3, 4. Now you can tell me like what will be the position of this point? Yes. क्या कर सकते हैं हम? So we can see like the first we have to see the magnitude. This magnitude is 5, and this we are assuming this over x-axis. So this point will be 5i comma 0 j, right now, or 5 comma 0. So we'll write in that case position vector as a 5i, and you don't have to write the j because it's a 0. Clear everyone? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए ना, हाउ वी आर लाइक चेंजिंग द रेफरेंस फ्रेम. ओके, now we'll see the displacement. You already know displacement is the shortest position between initial and final point, right? Or you can say the change of position is called displacement. Right now, its definition is very simple. Are you writing these things? Yes, everyone. Are you making the notes? Yes, sir. Okay, okay, great. So I'm going to ask you the question on this one now. हम धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ाएंगे, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट द पार्टिकल, एक सेकंड, initially particle is at 2, 3. After 5 seconds, it changes its position to 4, 7. Find displacement of particle. Question is clear to everyone? So that's 2,3 or 2,5? ऐसा होगा नहीं, you have to so yeah, No, what no, you no, have to sir. do now? Sir, I was asking, sir. It was Okay, okay, initially particle is at. yeah, 2, 3. It's a 2, 3 ना, Okay, sir. and this point is 4, 7. तो हम रूल ये है कि पहले आप सॉल्व करोगे, बाद में मैं सॉल्व करूंगा. ओके, so what is the displacement? So 2√5. 8, 2, 5. Okay, it can be. No, no, not 2 √5. Okay, okay, it can be possible, right? Yes, I have to calculate once. 4 minus 2, 2, and 7 minus 4. 4 square plus 2 square, 22 √5, right? दिव्यांश आपने बताया था ना? Yes, sir. ओके, ओके. सृष्टि आप बताओ कितना आ रहा है आपका? It's fine if you give the wrong answer ना. Just a moment. या कितना है सृष्टि आपका? काव्या, yours answer? Just a moment, sir. Yeah, okay, okay. Sir, I didn't understand why we square. I got 2,4, sir, but why did we square it, sir? Okay, okay, you got 2 √5. I understood we squared and we got 2 √5, sir, but why did we square, sir? Okay, 1 second. Uh, uh, Vijay, you are only speaking, na? Yes, sir. Yeah, Vijay, you just increase little bit volume now of your mic actually. Yes, sir. Now can you hear me, sir? Yeah, थोड़ा voice कम आ रहा है इसलिए.
अब बोलो दीदी। हाँ Yes, sir. So I got 2, 4, sir. ओके But टू why did we square it to get 2 root 5? ओके Sir, I ओके don't मैं understand. अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको ना। हाँ आई विल ठीक है। एक्सप्लेन नाउ। एक बार हम आंसर सबका चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके Okay, या sir. गुड ट्राई विजय ना। Yes, sir. या Villain, you joined just now, na? So this is the question like you have to find the displacement. Okay? Sir, root 20. Yeah, root 20, right. Good. बाकी लोग बताओ। आर्या। श्री लक्ष्मी, what is your answer? Okay, should I solve now? या आप अभी भी ट्राई कर रहे हैं? Okay, श्री लक्ष्मी, not a problem. You can just type answer, okay? Yeah, root 20. Good. It's a root 20, ना? Right. अर्णव, आपका कितना आया? अर्णव? Sir, I didn't get this. Okay, okay, no problem. तो हम करें इसको। काव्य, आपका कितना बताया था आपने? काव्य, did you got the answer? Yes, sir, मेरा भी root 20 आ रहा है. Yeah, good. Root 20 is the right answer, no? Yes. Okay, so let's see now how we can find out this one. So we know that displacement is nothing but the change in position. So final position minus initial position. Is it fine, everyone? ऐसे ही बोलते हैं ना? The change Yes, in sir. position. Okay. So what is your final position? It is 4, 7. So I can write this one as a 4 I cap plus 7 J cap. Okay. And what is my initial position? It's a 2, 3. So I can write 2I plus 3J. Now, what we'll do? We'll subtract I from I and J from J. मैंने आपको बताया था ना कि we always do this kind of operation with same type of physical quantity. तो यहाँ से जब इसको आप solve करेंगे, you will get 2I plus 4J. Now, if you have to find the magnitude, this is your actual displacement vector. Okay, so it has the magnitude as well as direction. But if you have to find the direction, so how you will find the direction? The square of this coefficient 2 square plus square of this number, that is 4 square. So we'll get root 20. Okay. Yes, sir. अच्छा, मैं आपको ना एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है क्या 10th क्लास का सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं आपको ना उसका यूज करके समझाता हूँ ना कैसे हम इसको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि आपको नॉर्मल तो समझ में आ ही गया, लेकिन कभी मान लीजिए आपको किसी और तरीके से सॉल्व करना हुआ तो मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। व्हाट वाज द पॉइंट? इट इज 2, 3 एंड 4, 7, राइट ना? सो दिस पॉइंट इज 4, 7. ओके, नाउ आई विल जॉइन लाइन लाइक दिस. कैन आई डू दैट? राइट ना? Yes, sir. Yeah. Now, can you tell me what is this length? We can call this one as a delta x, right now? So I can say this point will be nothing but the 4 minus 2 is equals to 2. Am I right? Yes, sir. और अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा? डेल्टा y, and that is nothing but the 7 minus 3 is equals to 4.
सो इफ यू विल सी दिस एज ए ट्राइंगल, ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में ना, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आएगा आपका, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट आर बोल देता हूँ ना, क्योंकि एक डेल्टा एक्स तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये वैल्यू कितना आएगा, इसको हम पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हैं। सो यू कैन से दिस इज नथिंग बट द 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √20। इज इट क्लियर एवरीवन? ये जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे ये ड्राइव हुआ आपका। यस। ओके ग्रेट, किसी को डाउट तो नहीं ना सर इसमें? आपने इसमें सर डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया है। क्या क्या हो गया सर दिव्यांश? आपने सर इस मेथड में सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया है सर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला था ना उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वही फॉर्मूला लगाया मैंने, राइट दिव्यांश, है ना? तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे मैथ्स यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है ना आपका, राइट? इट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। तो इस जैसे हमने सीखा ना पोजीशन, जैसे मान लो आपको इनिशियल पोजीशन दिया है और फाइनल पोजीशन दिया हो, तो हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड यू विल गेट योर पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया आप सभी को ना, एवरीवन गॉट इट, राइट? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करें, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं ना, मैं आपको आगे मिक्स कॉन्सेप्ट होने दो, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्टेंस। सी, अच्छा एक और चीज, अच्छा ये इसी में डिस्कस करते हैं हम वो चीज। जो डिस्टेंस होता है ना, इट इज द एक्चुअल पाथ एक्चुअली, वॉट एवर द पाथ दैट पार्टिकल इज गोइंग टू फॉलो टू रीच द फाइनल पोजिशन विल बी कंसिडर एज ए डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो जैसे कि इस केस में इनिशियली पार्टिकल एट दिस पोजिशन, चेंज द कलर, okay, and now it moved to the this position. So if I have to, if you have to tell the displacement, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। बट इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क यू द डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरा पाथ का लेंथ है इसका, दिस वन, सो यू आर गोइंग टू मेजर दिस कंप्लीट पाथ लेंथ एंड दिस पाथ लेंथ इज गोइंग टू बी डिस्टेंस। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी को, एवरीवन? Yes, sir. ओके, so and whenever we talk about the distance, it is actually a scalar quantity। क्यों? क्योंकि distance only has a direct, sorry, magnitude, it don't have any direction, और जिसका डायरेक्शन नहीं होता दैट इज, और डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वेक्टर्स लॉ फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी से डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। Okay, so this thing I already explained, like distance is a scalar and displacement is a vector. Distance depend on the path followed, while displacement depends on the initial and final position. Okay, we'll do this question. Arnab, you already done this question once, na? Yes, sir. Okay, so for all other students, na, this is the question. So first you have to solve, then I will solve. Okay, so solve this question. A main move to go, मैं आपको दिखाता हूँ उसका पाथ कैसा है पहले एक बार। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, है ना, पहले साउथ जाएगा, देन इट विल गो टू द वेस्ट डायरेक्शन, और उसके बाद जाएगा ये टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली, नॉट विद द डायरेक्शन। ओके, तो आपको करना है ना पहले ये सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sir, I got the answer. अर्नव, यू गॉट द आंसर? ओके गुड, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो एक बार।
मतलब इसी पे चैट पे ना? Yes, sir. या नो? Yes, I know, right. Yes, Divyans, right. सभी को बताना है ना? आई एम वेटिंग। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपके आंसर का वेट करूंगा मैं ना। यस, राइट आर्या, गुड। यस, करेक्ट आर्या, both the answer are correct. You take your time ना। ओके जी कृष्ण। ओके, योर डिस्प्लेसमेंट इज राइट ना? थोड़ा सा एक बार है ना, आपका जो सॉरी डिस्टेंस इज राइट विजय कृष्णन। जस्ट रिव्यू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो वंस, ओके? एक बार इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो, डिस्प्लेसमेंट। यस काव्या, व्हाट इज योर आंसर काव्या? डूइंग इट। नंदिनी? यस काव्या, डिस्टेंस इज करेक्ट। नाइस। नंदिनी, योर आंसर? श्री लक्ष्मी, सृष्टि? Sir, I sent my answer. ओके 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 सृष्टि। श्री लक्ष्मी, नंदिनी, विलीन? करें सॉल्व इसको हम लोग? शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग नाउ? Yes, sir. So see, this main is moving 50 meter this side, so this is 50 meter. Then it is moving 40 meter this side, right? You can see the question now, it moves 50 meter south, 40 meter west and 20 meter due north. तो यहाँ पे कितना मूव करता है ये? 20 meter. So if anyone is going to ask you the distance, so distance is what? The total path length. So how much total he traveled? So he traveled total distance 50 plus 40 plus 20. It's 110 meter. Right now? Similarly, if you have to find the distance, so distance is what? Is a shortest distance between the initial and final position. So वो कैसे निकालेंगे हम? So you know this thing like this is distance how much? ये कितना होगा आपका? 40 meter, right? And this one, देखो 50 ये तो, centimeter. हाँ ये पूरा 50 है ना? 50 minus 20 कर देंगे, this will come 30 meter. ओके? अब आप देखो यहाँ पे, if you see here, this is your right angle triangle, right?
और ये जो आपका है यही आपका क्या है इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। So what will be your displacement? So we will use the Pythagoras. This square plus this square. So I can say displacement is equal to root over 30 square plus 40 square. So it is 50 meter. Is it clear, Vijay? Yes, sir. Okay. बाकी सभी को क्लियर है ये? Yes, Sir, sir. I want to ask something. Yes, sure, Divyansh. सर हम इसे सर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ना। अब आपको इसका क्या डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन, राइट? ओके तो देखो अगर आप क्या करते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हो, देन इट इज इजी टू राइट द इन वेक्टर फॉर्म। अदरवाइज आपको क्या उसका लिखना, ऑरिजिन ले लेता हूँ। हाँ, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट लाइक दिस, इट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, इट इज 37, राइट? सो राइट 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, राइट ना? साउथ से ईस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल है ये, 37। ओके दिव्यांश? ओके सर। जनरली आपसे अगर मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं पूछते ना, तो लाइक 90% केस में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछते हैं वो लोग। ओके या ओके सर। ओके, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, एवरीवन हैज टू टेल मी द आंसर। राम टेक पाथ 1 स्ट्रेट, गो P2Q, एंड श्याम टेक पाथ 2 सेमी सर्कल। You can see in the diagram now. You have to find the distance traveled by the Ram and Shyam and displacement of Ram and Shyam both. ये तो आप बिना सोल्व कर दे सकते हैं ना डायरेक्टली। You can give the answer. Yes, anyone got the answer? कर रहे हो आप लोग सॉल्व इसको, एवरीवन? दिव्यांश आपका आया आंसर इसका? ओके गुड, यस सर। ओके नाइस नाइस दिव्यांश, गॉट इट। काव्य आपका कितना आया इसका आंसर? नंदिनी? यस राइट काव्य। अर्णव आपका कितना आया? अच्छा, अर्णव का तो आ जाएगा, आई एम श्योर। अर्णव ने किया है क्वेश्चन पहले एक बार। षष्ठी योर्स? Sir, I'm solving. Okay, okay, sister, do it. Yes, Vijay. Displacement is right for the both, no? Displacement is correct, Vijay. Also write the displacement. Sorry, distance. You have written displacement correctly. देखो करते हैं इसको ना हम लोग। As per the definition, the shortest distance between the initial and final position is called displacement. So we know Ram and Shyam initially at P point and final both the
person, Ram and Syam, is at Q. So we know the shortest distance between the P and Q is 100. So displacement is 100 meter for Ram and for Syam. But if we are going to discuss about the distance, then you can see like P to Q, who is going straight? Ram, right? So the distance for the Ram is 100 meter. But if you see the Syam, he is going to follow this semicircle path. And you know the length of this perimeter is what? Pi r, right now? The length of perimeter. So what is the r here? So r is 50 because 100 is the diameter. So I can say the distance traveled by the Syam is a 50 pi. Yes, Vijay, you also got it right now. Yes. Is it clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट. हम क्या ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, मैं चेक करता चल रहा हूँ साथ में. अगर मैं एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन दूंगा ना, देन इट विल बी प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके. यस. नाउ वी विल सी द वेलोसिटी. So you know what is the position, what is the distance, and what is the displacement. Now we'll see the velocity. So the rate of change of position with respect to time. Okay. यहाँ पे हमारे लिए with respect to matter करता है. Like we are going to see with respect to time only. So you can say the velocity is rate of change of position with respect to time. So this is our definition. And if anyone is going to ask you about the unit, so unit of velocity is meter per second. If anyone is going to ask you about the dimension, so you know it has the sorry, meter, it's a L, and it's a per second. So T minus 1. This is the dimension for velocity. If anyone going to ask you about the whether it's a scalar or the vector, so it is a vector quantity. Is it fine, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Now there's another term that we call the average velocity. है ना. देखो एवरेज वेलोसिटी इज वेरी कॉमन. लाइक फिजिक्स में इसका क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा ना. वेदर यू राइटिंग द जेई मेंस, एनडीए और द नीट, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है ना. सो एंड आप पीवाई क्यूज करोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर. एंड हाउ वी डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी? इट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो दिख ही रहा है. 1 second. So you can write V average as net displacement upon total time. ठीक. So you can write delta x by delta t. And here delta x is a position vector. So you can say this is your average velocity. Right now? Definition तो काफी easy है. इसका definition में तो problem होगा नहीं. Okay. Now there's another term we call it as a instantaneous velocity. तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा या टी इक्वल टू 2.5 सेकंड पे पूछा है, और दे आर आस्किंग एट पर्टिकुलर टाइम लाइक से 5 सेकंड. तो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे जो उस ऑब्जेक्ट का या उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Now you can say one thing like magnitude of instantaneous velocity and the instantaneous speed both are equal. The only difference is that like instantaneous speed don't have a direction, but velocity have a direction. And if anyone is going to ask you about the direction, the instantaneous velocity is always tangential to a path. क्या मतलब है इसका? Suppose करो this is some path, okay, and particle is moving on this path like this. So अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is the direction of velocity, तो at this moment if you see the tangent on this particle, this will represent the direction of velocity at this moment. अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम? We'll draw the tangent at this point. So this is the direction of velocity. अगर आपसे कोई यहाँ पूछता है, so what you will do?
You will draw the tangent at this point, and this point will give you the direction of instantaneous velocity. काफी सिंपल है ना, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, राइट? Yes, sir. You can ask the doubt ना, अगर आपको कोई लगे ना कि पिछला, if you have any doubt you can ask. एक क्वेश्चन करें हम इसके ऊपर, we'll do the questions, okay? 1 second. A particle initially at 3,4 and it moves to a point 7,10 in 3 seconds. Find average velocity. You have to do this question now. You know the formula, V average is what? Net displacement upon total time. I am waiting for your answer. Okay, everyone? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सबको ना, और आंसर बताना है, इवन दो इट्स रॉन्ग, आपको शेयर जरूर करना है आंसर. आइदर यू कैन बी रॉन्ग नाउ और इन एग्जाम ना, तो आई विल प्रेफर कि अभी आपका गलत हो जाए इंस्टेड ऑफ एग्जाम. तो जो भी आपका आंसर है ना, शेयर जरूर करना, ताकि आपको समझ में आएगा वो. आप जो आंसर शेयर करेंगे ना, तो आपको डाउट पूछने में भी मतलब हिचकिचाहट कम होगी. ओके, यस, ओके, वेरी गुड. ओके, 4.2. 1 second, let me check. 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 52. हाँ, राइट दिव्यांश. नहीं दिव्यांश, थोड़ा सा एक नंबर ज्यादा लिख दिया आपने, एक बार चेक करो उसको. अना, योर इज राइट. नहीं काव्य, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें ना. एंड विजय, यू आल्सो हैव टू चेंज लिटिल बिट ना. यस, ओके, ओके आ गया. ओके, यस दिव्यांश. हाँ, यही आएगा जो आपने लिखा ना दिव्यांश. यस, ओके. So let's see now how we'll find the this one. It's a change in position, means final position minus initial position is your net displacement upon total time. I know my final position is 7i plus 10j minus initial position is 3i plus 4j, and what is total time? It's a 3. So if you solve this one, you will get 4i plus 6j divided by 3. Or if you are writing in the magnitude form, then you will get root over 4 ka square plus 6 ka square by 3. Or you will get root 52 by 3. Or you get root 2 root
13/3। समझ में आया आप लोगों को ये? बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, ग्रेट। अभी हमें ना इजी क्वेश्चन से चल रहे हैं ना, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एवरेज स्पीड। सो जैसे हमने एवरेज डिस्प्लेसमेंट लिया था, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी लिया था, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द सेम वे यू कैन डिफाइन द एवरेज स्पीड एज अ टोटल पाथ लेंथ अपॉन द टाइम टेकन। सो आई कैन से वी एवरेज। एवरेज मीन्स किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट ना? सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो एवरेज स्पीड होता है आपका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट तो वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट था, और डायमेंशन भी सेम होगा। ओके, Yes, sir. नाउ इफ यू सी द एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, even though scalar quantity can be also like positive, negative and zero. But in case of our speed, we always take average speed as a positive quantity, because we know that distance traveled by any particle cannot be less than zero, right ना? इतना क्लियर आपको कि डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस का भी जीरो नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है। अगर रेस्ट पे नहीं है पार्टिकल, उस केस की हम बात कर रहे हैं, देन वी कैन से लाइक एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, zero in one case, or right when the distance is zero, otherwise it is always positive. If motion of particle is along a straight line in same direction, then average velocity is equals to average speed. तो ये कब होगा आपका? when object is not turning its direction, means it's moving in straight line continuously without turning the direction. Average speed in general greater than the magnitude of average velocity. Okay, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप सभी को? Everyone can see the question? Yes, sir. ओके, तो देखो क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना? ये क्वेश्चन हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे ऐसे बैक टू बैक। ओके, तो आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल travels half of distance with speed v1 and next half distance with speed v2 along a straight line. Find out average speed of a particle. आपको ये फिगर आउट करना है ना, कि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार क्या बोल रहा है, कि एक टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से जो आधा डिस्टेंस है, मतलब कि x/2, इसको वो ट्रेवल करता है v1 से, और जो आधा डिस्टेंस बचता है ना उसकी जर्नी का, वो ट्रेवल करता है v2 से। आपको बताना है v एवरेज कितना होगा। ओके, डू इट। ओके विजय कृष्ण, राइट, किया हुआ है आपने पहले से ये। Sir, I got the answer. ओके, क्या आंसर आनो? 2v1 v2 by v1 plus v2. अच्छा, हाँ, ये मुझे थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। आई नो, एक और बोलो, क्या बोला आपने? ठीक है सर। एक और नहीं, एक और बोलो, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया शायद। क्या बोला आपने? v1 2v1 प्लस v2 और v1 v2? नहीं v1 v2. हाँ सही है ना, फिर सही है। ऊपर जो है वो v1 v2 होना चाहिए, नीचे v1 प्लस v2 है तो हो सकता है सही है, क्योंकि डायमेंशनली हमारे सही होना चाहिए ना। हाँ. यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली ना, पहले आप ये सोल्व करो, फिर हम इसमें ना धीरे धीरे इसी क्वेश्चन में हमारा लेवल बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे। ओके,
Yes, anyone else? Okay. ओके दिव्यांश, हाँ आपका सही लग रहा है दिव्यांश आंसर मुझे, राइट। आर्या, व्हाट इज योर आंसर? गुड नंदिनी, वेरी गुड। गुड आर्या, यू आर राइट, वेरी गुड। सबका आंसर सही आ रहा है ना, गुड। आप बताओ जिनका बचा है। काव्या, योर आंसर। सृष्टि। Yes, sir, I'll just type it. या ओके। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस वन। ये तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, इसके इसके जैसे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक। ओके, चलो स्टार्ट करें इसको। ओके, चलो। तो देखो क्या दिया है आपको, ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस ना, सो मैं लेट मी टेक द टोटल डिस्टेंस एज ए एक्स, और जो हाफ डिस्टेंस है मतलब कि x/2, इसको कितने से ट्रेवल करना है, इसको v1 से, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट इज गोइंग टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ v2। नाउ व्हेन आई हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, v एवरेज इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस, जो भी हमारा यहाँ पे, अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला क्लियर है सभी को, आई होप एवरीवन। Yes, sir. या अब देखो, व्हाट इज द टोटल या नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू कवर इज द x only, right now? Sir. The distance is x only, right? Total. Okay, sir. Yes, sir. And if you take the time, so you can say here it's taking the time t1, and you can say here it's taking the time t2. So total time I will take as a t, and I can say t is equal to t1 plus t2. When I have to find the t1, तो t1 क्या होगा, ये वाला टाइम, और ये वाला टाइम कितना होगा, इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 मुझे मिलेगा x/2 अपॉन v1। सिमिलरली जो t2 मिलेगा दैट इज x/2 अपॉन v2, राइट ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, सो आई विल गेट x अपॉन x/2v1 प्लस x/2 v2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट, सो यू विल टेक 2v1 v2 एज एलसीएम, और फिर वो ऊपर चला जाएगा आपका, सो विल गेट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो दिस इज योर v एवरेज। क्या ये क्लियर है सभी को, एवरीवन इज? हाँ, स्पीड ही बताया मैंने, आई नो ना, आई हैव एक्सप्लेन द स्पीड ओनली, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द नेट डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। ओके, स्ट्रेट लाइन में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? काव्य, आपको क्लियर हुआ ये वाला?
Yes, sir. चलो हम थोड़ा बढ़ाएं लेवल इस क्वेश्चन में हमारा. ओके, द क्वेश्चन इज सेम. ओके, अब थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं अकेले. ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन फॉर हाफ ऑफ द टाइम. कहाँ गया पेन? A particle is moving for a half of the time, okay, with speed v1 and half of the time with speed v2. Find average velocity of a particle. कितना आएगा इस बार? यस, कितना आया अर्णव आपका? Sir, V1 plus V2 by 2. Very good. This time you're right. It's correct. Yes, Vijay Krishnan, very good. आपका भी सही है ना? Then other student, Divyansh, I think you got the answer, right? Yes, sir. Okay, so what we will do here, na? Again, we will use the same concept. Total path length or total distance by total time, right? तो डिस्टेंस कितना होगा तो इसको मैं मान लेता हूँ x1 एंड दिस वाले पार्ट को मान लेता हूँ x2. So my total distance is x1 plus x2 and the total time t half and t half. So it will be t only. x1 is what? v1 into t by 2, right now? Similarly, x2 you can write v2 into t by 2. So that divided by t, you will get v1 plus v2 by 2. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Let me take one more question. Okay. इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा ना. A particle is moving, okay, for half distance. Is travel with the speed of v1 for remaining half distance. Okay, whatever the remaining half, let me say x by 2. For this remaining half, for the half time, it travel with a speed v2 and the remaining half time, it travel with a speed of v3. You have to again tell what is the average speed. This question is clear to everyone? क्वेश्चन पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको ना, ये वाला. दिव्यांश, आपको क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अर्णव, आपको? Yes, sir. ओके. विजय, आपको भी? ओके. विजय थोड़ा सा चेंज होगा ना? नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा. विलीन, करो इसको आप भी. Yes. ओके. अगर आप देखोगे ना, मैं क्वेश्चन है ना आपको धीरे धीरे लेवल ऊपर लेके आया हूँ, ये वाला ना. तो आपको ये क्वेश्चन मतलब जैसे हमने पहले किया ना उसी की तरह करना है ऑलमोस्ट. And this time of question you can expect in a JEE mains and advance. Okay. नीट के लिए इसके पहले वाले जो हमने किए थे ना, इसके पहले, that is up to the like NEET level. But this question you can expect in a mains and advance and NDA exam also. Okay, good enough. I think you'll not get power too, otherwise everything is fine.
Okay, good. Yes. What is the answer? Arya, what is your answer in this question? Sir, not so sure. Okay, okay. Before that you got it, ना? आर्या, इसके पहले के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है ना. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक थोड़ा इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, तो नो प्रॉब्लम. तो हम लोग सॉल्व करें इसको नाउ. नाउ वी कैन सॉल्व इट ना. Yes, sir. ओके. सी, if you have to find the average speed, what is that? Total distance upon total time, right? If you are going to ask me the total distance, it is going to be x by 2 plus x by 2, right? So it is going to be x. Now we have to find the time. So let's say this time is t1 and this complete time t by 2 and t by 2 say t2. So I can say my total time is t1 plus t2. क्या इतना क्लियर आप लोगों को? Everyone clear ना? It's very simple. Now we'll put in the value of t1. So what you will get the value of t1? T1 is nothing but from here you can get the t1, right now you can say is v1 is equals to x by 2 upon t1. So t1 is equals to x by 2 v1. So I can write here x upon 2 v1 plus. Now I have to write the t2. So you say like for this half time, it is going to cover a distance x1, and for the next half time, it is going to cover a distance x2. And I can say x1 plus x2 is equals to x by 2. Is it fine, everyone? ये मैंने कैसे लिखा x1 plus x2? Yes, sir. Okay. Now, in place of x, I can write like from here, what I can write in place of x? v2 into t by 2, right? v2 into t by 2. Similarly, from this side, what you will get? Plus x2 is equals to v3 into t by 2 is equals to x by 2. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा t is equals to x upon v2 plus v3. Is it fine, everyone? So this time t is nothing but t2 only, right now? This t half and t half is t2. So I will replace the value of t2 here. So I will get x upon v2 plus v3. क्या आप लोगों को ये समझ में आया इतना पोर्शन? एवरीवन आर्य, आपको ये समझ में आया इतना जितना हमने किया अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. विजय आपको? Yes, sir. ओके ग्रेट. श्री लक्ष्मी? ओके नो प्रॉब्लम. आपका माइक का प्रॉब्लम है. नंदिनी, आपको समझ में आया इतना? ओके ग्रेट. सो नाउ विल सिंप्लीफाई दिस वन ना. तो आपको क्या मिलेगा? यू नो एक्स विल कैंसिल आउट. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और फिर ये ऊपर चला जाएगा. तो क्या आएगा आपका? 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2v1 प्लस v2 प्लस v3, एंड दिस इज योर v एवरेज. इज इट क्लियर एवरीवन?
किसी को वापस समझना हो तो आप बता सकते हो मुझे ना, अगर सबको समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, we'll do one more question. Okay, so the question is like that: a particle ऐसे सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। ओके, और इनिशियली जो पार्टिकल है आपका, वो, एक सेकंड, इधर नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, तो आपका ये पार्टिकल इस तरह साइकिल में मूव कर रहा है। एट दिस पॉइंट इट हैज अ स्पीड v, इसका जो रेडियस है वो r है। आफ्टर रिवॉल्विंग π/2, आपको पता है इसका स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो इट इज स्टिल मूविंग विद स्पीड ऑफ v ओनली। तो आपको क्या बताना है, इस π/2 ड्यूरेशन जो इसने एंगल रोटेट किया, इस टाइम में इसका v एवरेज अपॉन v इंस्टेंटेनियस का रेशो क्या होगा। ओके, व्हाट इज द रेशो ऑफ v एवरेज अपॉन v इंस्टेंटेनियस फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ लाइक रोटेशन ऑफ π/2। v इंस्टेंटेनियस में कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको, दिस इज ऑलवेज v। ओके, आपको सिर्फ v एवरेज निकालना है कुल मिला के। यस एवरीवन। सर ये सर हमारा भी स्पीड है ना? हाँ, ये यहाँ पे v आपका स्पीड है ना। आई थिंक, हाँ, सही है, लग तो मुझे भी ये रहा है ना। राइट विजय कृष्णा, लेट्स सी। ओके, नो, लेट्स सी ना वो क्या आता है हमारा आंसर। गुड ट्राई एवरीवन। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ना। आर यू स्टिल ट्राइंग? कोई ट्राई कर रहा है दीदी? मैं वेट कर सकता हूँ ना अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। दिव्यांश? सर डूइंग सर। ओके ओके, डू इट ना, टेक 2 more minutes, ओके, देन आई विल डू इट। कितना आंसर है नंदनी आपका? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। चलो तो करते हैं इसको हम ना। आई होप आपका आंसर, हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ नंदनी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपको मिलेंगे जरूर। ओके, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मेंस स्पेशली, जेई मेंस। ओके, सो आपको जब भी बी एवरेज निकालना होता है, सो हाउ विल फाइंड द बी एवरेज? बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
ओके, 1 सेकंड। सॉरी। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, वापस से वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो आपका बेसिक स्टेप है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कितना कवर किया इसने, तो इसने कवर किया ये वाला डिस्टेंस, राइट। अच्छा, सही था आपका ना। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था, जो क्वेश्चन था ना, सॉरी एक बार करेक्ट कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशो, ओके, द क्वेश्चन इज दैट। सो हम यहाँ पे ना एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी। यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन है आपका जेई में, वी एवरेज अपॉन वी इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे ये जो है ना एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज स्पीड से तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा ना, वो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको पता है इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था और फाइनली पार्टिकल यहाँ आ जाता है, तो आप देखोगे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज दिस पोर्शन। अगर ये हमारा रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आएगा, r√2 यूजिंग पाइथागोरस। सो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द r√2। एंड इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू द टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हर पूरे इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर जो मूव कर रहा है, पहली बात तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, πr/2। और कितनी स्पीड से मूव किया इसने, लगातार v से, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो टाइम है इसका एक्चुअली में डेल्टा टी, वो कितना होगा, डिस्टेंस दैट इज πr/2 अपॉन स्पीड दैट इज v। तो कितना मिलेगा आपको ये, इट इज πr/2v। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू क्या था, r√2 इज योर डिस्प्लेसमेंट and what is your time, delta t, that is pi r upon 2v. So r and r will cancel out, so we'll get 2√2v, sorry, 2√2v upon pi. So this is your average velocity. You have to find v average upon v, so you will get 2√2v upon pi डिवाइड बाय v। सो v से v कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट 2√2 बाय पाई। इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ यस सर। यस सर, आपका। स्पीड से तो सर कोई अलग ही आंसर आ रहा था। हाँ मैं समझ गया था, वो थोड़ा गलत हो गया था मेरे से बोलने में। स्पीड से आप सही बोल रहे थे, आर आर वो क्या कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ बचेगा ही नहीं ना। यस सर। सो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ना होमवर्क करिएगा, ओके ओके एवरीवन। तो करोगे आप सभी लोग, मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे इसका सॉल्यूशन, एवरीवन बोलो। यस सर। आपका अगर आप ये करोगे ना, तो आपको जेई में इसका फायदा मिलेगा, नीट में मिलेगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम एवरी ईयर, ओके। आज नहीं तो कल तो आ ही सकता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, ओके अगेन। तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, इसका स्पीड कितना है, v है। आफ्टर सम टाइम ये एंगल मूव कर जाता है 2π/3, और यहाँ पे भी इसका स्पीड कितना है, v, ठीक है। आपको क्या बताना है, अच्छा इसका रेडियस r दिया है आपको, और आपको बताना है वापस से कि जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका रेशो कितना आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? जल्दी से हाँ बोलो। Sir, can you please explain? I mean, repeat the question once more. ओके, यू गॉट द आंसर, गुड। आपको है ना इसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, ओके एवरीवन। सर एक बार क्वेश्चन से दोबारा बताना।
हाँ मैं क्वेश्चन वापस से बता देता हूँ। जैसे अभी हमारा इसका पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। उसमें बस जो एंगल था वो पाई/2 था, इसमें जो एंगल है वो कितना है, सॉरी 2π/3। ओके दिव्यांश? Okay, sir. Yeah. So you have to find the ratio actually. What is the ratio of V average to V instantaneous? Okay. And you just solve this question, share with me, and we'll continue like after this in tomorrow's class. Okay, everyone? Okay, sir. Yes. कोई डाउट आज की क्लास में आपको किसी भी प्रकार का? एनीवन? नहीं ना? ओके देन, सो विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास ना, ठीक है? Okay, sir. या ओके एवरीवन, गुड नाइट देन, सी यू टुमारो, बाय। Sir, good night, sir. Thank you.